veterans who are on the dais in general, respected veteran from Nepal and Sri Lanka, and respected Sri Goparaj Garu. आपका presentation मैं सुना आज. I heartily greet all of you. I belong to Hyderabad city, but I am living in Delhi since last more than 3 decades. From the day I had interactions with Sri Balabhaskar ji, particularly related to some accommodation and facility that was sought for the journalist friends. To the best of my ability, I extended service to the, particularly to Sri Balabhaskar ji. Now I am seeing the board, Indian Media Journalist Union. I richly compliment Indian Media Journalist Union and its president. Pens with no pencil. Pens with no pencil. कलम को वैल्यू है, लेकिन कलम को सिक्योरिटी नहीं है. कलम is very valuable. With kalam, we are building up the knowledge of the humanity. With kalam, we are even dethroning the corrupt elements. But unfortunately, the authors, those who are contributing for the society and also ventilating the public feelings, frankly, truthfully, efficiently, they have no social security. सामाजिक रक्षा आपको नहीं मिलती. पहली दफा मैं आपका ये फंक्शन में भाग लेने के लिए आया. मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है जर्नलिज्म के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में जितना नॉलेज है. मैं सोचा था जर्नलिस्ट मोस्ट पावरफुल वॉइस ऑफ पब्लिक ओपिनियन. मैं सोचा था, बट यू ऑल्सो हैव ग्रीवेंसेस एज वी सफर. रेलवे एम्प्लॉइज, 13 लाख रेल कर्मचारी और 25 लाख रिटायर्ड रेल कर्मचारी, 38 लाख रेल परिवार हम भी फेस कर रहे हैं. बहुत समस्या है. सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, और जो सैक्रिफाइस किया देश निर्माण के लिए, देश प्रगति के लिए, वो सैक्रिफाइस का रेट ऑफ रिटर्न क्वांटिफाई करके देने में पे कमीशंस भी विफल हो गई, सरकार भी विफल हो गई. These are the difficulties we are facing, whether journalists or working class in the country. Having associated myself today in this congregation with the kind invitation of Sri Balabhaskar Garu, I am learning my Sikh army. I do not know much about the service conditions, working conditions of the journalists of our great nation. Now when you are saying here, pens with no pension, means there is no guaranteed pension, there is no retirement pension, there is no gratuity, there is no commutation of pension, there is no family pension. Means the people, those who have built society and contributed for the growth of the nation, they are the neglected lot. I concede.
What I can do as an individual Raghavaya, with my limitations that I have to think over, I will be interacting with Sri Balabhaskarji, and what best I can also contribute for providing service to our friends, particularly Indian Media Journalist Union. We will definitely try. Railways is a big network covering about 70,000 route kilometers of the entire network, and our staff are also suffering. As Goparaju ji said, मेरा ट्रैक मेंटेनर रेल पटरी पे दिन रात काम करता रहता, पेट्रोलिंग में गाड़ी मारेगी मरेगा। अनिल काकोडकर जी का रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, भारतीय रेलवे हर दिन प्रतिदिन 2 लोग ऑन ड्यूटी पे मरते इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ये है हमारा चरित्र। ऐसा इतना दुर्भर परिस्थिति में भी हर दिन 24 घंटे में 22,000 गाड़ी हमारा रेल कर्मचारी चला रहे, मुनाफा कमाया, ऑपरेटिंग रेशियो इंप्रूव किया, प्रॉफिट इंप्रूव किया, रेल मंत्री अभिनंदन किया, रेल कर्मचारियों को माननीय प्रधानमंत्री ने अभिनंदन किया। लेकिन समस्या तो है, बहुत समस्या है। वर्कलोड में समस्या, ड्यूटी आवर्स में समस्या, फील्ड में समस्या है। As journalists are facing difficulties, we are also facing. You are also working class. You are working for the nation. You are working for the society. You are working for ventilating the real feelings of the publics of various walks of life. Your contribution is very greater. The governments of the day should give greater respect, greater protection, and improved service conditions and certain guarantees to the journalist community in our country. इसके लिए अभी मुझे विश्वास है कि इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन संगठित रूप से लड़ेगी, संघर्ष करेगी, और ये मूवमेंट को चलाने के लिए आपका सहायता, मुझे विश्वास है आपका सहायता भी मिलेगी। मैं भी जो NFI नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ये माइटी ऑर्गेनाइजेशन, मैं सेवक हूँ। मैं दिल्ली में बैठ कर काम कर रहा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। बच्चे लोग हैदराबाद में हैं, मैं मेरा पत्नी वहाँ बैठ कर काम कर रहे हो। एट द एज ऑफ 90 years, I am working. This is life. 65 years I have completed as on date in the railway trade union movement. I joined as an ordinary railway employee in the year 1958 November. Retired in 1994. I am grateful to 13 lakh railway employees for reposing confidence in me and re-electing me as a general secretary. A man of Telugu area, Hyderabad वासी, दिल्ली में 4 तारीख सितंबर 25 इलेक्शंस में ये राघवैया को 15,000 डेलीगेट्स ने पुनः री-इलेक्ट किया जनरल सेक्रेटरी से कंटिन्यू करके। वो कार्यक्रम करके भाई फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद आया, ये साउथ सेंट्रल का काम भी देखने के लिए। सो दिस इज द लाइफ, वी हैव टू सफर। आई वर्कड इन कर्नाटका, आई वर्कड इन महाराष्ट्र, देन आई एम लिविंग इन दिल्ली इन पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। क्या करेंगे?
We have to serve the humanity. We should take commitment. One factor we should all bear in mind is selfless working, honest working, clean-handed working, and working against corruption, working against nepotism, and working against favoritism, and working for the cause of all sections of people. ये हमारा बेटा होना चाहिए. बालाजी का कृपा. At this age also, I am moving now. आपका दर्शन करने के लिए मैं आया. ये भाषण देने के लिए नहीं, आपका दर्शन करने के लिए. पहली दफा आपसे मिलने को मौका मिली. मैं बाराभास्कर जी को धन्यवाद करता हूँ, मुझे मौका दिया आपसे मिलने के लिए. यहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ चेन्नई जाने के लिए. मेरे साथ में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी श्री वी गोपाल कृष्णन, ये चेन्नई में रहते गोपाल कृष्णन जी आए. गोपाल कृष्णन जी मुझे लेकर जा रहे चेन्नई में 3 दिन का मीटिंग करके फिर वापस आके फिर यहाँ से विशाखापट्टनम जाना, फिर वापस आके दिल्ली वहीं जाना पड़ेगा. So we are all working for the common good of people of this country. We have to work, face humiliations, face difficulties, face shocks, but undeterred, निर्भय से आगे बढ़ना पड़ेगा. This is the need of the hour. So I do not want to take much of the time because Gopal Krishnan ji has fixed my schedule. 1 बजे यहाँ से चलना पड़ेगा. अभी I think 1 o'clock. अभी जाना सीधा एयरपोर्ट जाएगा, फ्लाइट पकड़ना. So once again I richly compliment Indian Media Journalists Union and I express my sincere gratitude to Sri Balabhaskar ji. I have no contact with any one of you except Sri Goparaj Garu reminding me to recollect his interaction with me. Kota Vijay Bhaskar ji, I belong to his district. I am also from Kurnool district. He offered me the MP ticket. I refused. I will not enter into politics, I told. But I always supported him. I contributed for his election. Similarly, Shiv Shankar, former High Court Judge of Hyderabad, I got him elected. 70,000 votes. I ensured that all the 70,000 votes are given to P. Shiv Shankar, who became Central Minister. Yeah. And I am so happy that political leaders also look at me for help, for support. So we are saying we should build up our individuality, efficiency, skills to the level that the government or authority should look at you and feel that you are required, your support is required. That is how we have to build up the organization. I am thankful to all of you. I am thankful to our veteran also. When I just walked in, he was addressing all of you by name and credentials. I cannot express because I do not know. However, I take this opportunity to thank all of you. Next time when we have free time, we can try to interact. Thank you very much. And I extremely express my gratitude to Sri Balabhaskar ji. Thank you very much.